Very good morning, students of class 10th. Here I am Poonam Prasad with the sectors of Indian economy. The last topic of your chapter and the covering topics of today's lecture are health and housing. Students, housing is a serious social infrastructural challenge in front of Indian government. Question arises, how can we say that housing is considered as a serious social infrastructural challenge in front of Indian government? Write your own points, write your own views. How can you put your answers in front of this sort of questions, value added question hai? So there are the following points that we have to discuss. Children, it is true that the basic need of the human being is food, clothes and shelter. It means the shelter is termed to be, it is one of the basic necessity of life other than your food and clothes. Students, we are knowing that house is not merely a shelter to protect from the odds situation. Either it can be from the odds, from the nature's, you can say, havoc. But it is also a place where human beings are prepared for constructive role in the future. We are having lots and lots of dreams to fulfill, but from where do we have to fulfill that dream? It means the shelter should be there to whom we from where we can make our dreams to come true. बेटा, ये वो जगह है जहाँ पे हम अपने सपनों को कारगर या सपने लेते हैं और सपनों को पूरा करने के लिए हम एफर्ट्स लगाते हैं, अग्रसर होते हैं. तो हाउस इज़ नॉट मियरली अ शेल्टर. हम थक हार के व्यक्ति दिन भर अगर काम करके घर जाता है तो उसे एक सुकून मिलता है. जानते हैं क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ प्लेस in which I can live freely, I can share my thoughts, I can share my feelings, I can live with my families, I can share my emotions with my family. It means yes, ये वो जगह है जहाँ से हम अपने सपनों को पूरा करते हैं, हम कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं. Students, billions of people in India have a requirement for a job. जानते हैं क्यों? क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल आर नॉट हैविंग देयर शेल्टर्स. उनके लिए जो शेल्टर है, दे हैव द शेल्टर्स ऑन द फुटपाथ, स्लम्स एरियाज, चॉल्स. अब कहने के लिए तो घर है, शेल्टर है, टनल्स हैं, बट क्या वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं? क्या वो प्रॉपर हाइजीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं? नहीं बेटा. About 71% of rural household, it means rural India is not having proper drinking facilities, not they are having proper sanitation facilities. It means the hygienic condition of the rural India is very very poor. It means बहुत ही ज़्यादा ये ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं चल रहा है या स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट हुआ है उसके बाद ऐसा नहीं. स्वच्छता है, हम कह सकते हैं, पोल्यूशन कम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रूरल इंडिया है, इट इज़ नॉट एबल टू गिव द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है टू इट्स पीपल. द नेशनल हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी, इट वाज फॉर्मुलेटेड टू meet the challenge of the solving the housing problems. And to what type of housing problems? As I have already told you about that, unhygienic condition is there, no proper water drinking is there, no sanitation is there. It means all these are considered as a challenge in front of Indian government. So
the government, what is the important thing? The government have a contract with the builders to facilitate the housing activities to the poor people. Specifically, the policies are made by the government to eradicate the housing policies, children. And the most important objective of the people, you can say, of the government is to provide affordable shelters to the vulnerable section of the society. It means the depressed class is there, the minorities one is there, the poor people is there, even though the women section is there, to provide the affordable, cheap and affordable house facilities to them. Pradhan Mantri Niwas Yojana. The schemes are there in front of the people. And basically, the aim of these sorts of scheme is to provide affordable as well as cheap, क्योंकि घर बनाना it termed to be the investment of the rupees, not in the thousands but in the lakhs or the crores, you can say. Students, the government is putting forward to give the opportunity to its citizen for their productive participation in the growth process of a country's economic development. But there are lots and lots of challenges in front of the government, children. The education is a prominent challenge in front to give the good education, to give good health facilities, to give proper housing. These all are considered as these all are the apart from the poverty, apart from unemployment, these are considered as a serious, you can say, serious challenges in front of the Indian government. The next topic is about the role of health in human resource development. Healthcare is a human right. This is true, children. If we are talking about the human resource development, the students, health is quite important component after education. I am not saying about as after education, but simultaneously it is go with the education. Because if the mental and the physical health is not proper, we are not able to get a good education, children. So for the development of the human resource, we need a proper health. And proper health measurement is related with the life expectancy at the birth. आप लोगों ने चैप्टर डेवलपमेंट में भी पढ़ा होगा अबाउट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, आयु दर. ये आयु दर अल्टीमेटली कंसिडर करता है एक हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री को. It determines the health facilities provided by the government to its citizen children. अगर मृत्यु दर अच्छी है तो हम कह सकते हैं, ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं very poor health facilities of a country. It means you can say death rate. But if we are considering it as a good life expectancy at birth, so we are considered that the government is focusing more on the health facilities. बेटा इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर हम डिकेड्स की बात करें 30 और 40 डिकेड्स पहले, हेल्थ फैसिलिटीज़ या लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज वेरी पुअर. अभी की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इट इज़ नियरली 68 years and it is reaching towards the 70 years. This is quite impressive, you can say. इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर हम आज कोरोना को देखें तो इस कोरोना काल में भारत का जो मृत्यु दर है वो अपेक्षाकृत एज कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड कम है. ऑल्दो हेल्थ फैसिलिटीज़ हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है. Health facilities are not equally distributed among the people because there is a huge difference between the economic disparities between the rich as well as the poor. But yes,
इंडियाज़ पोजीशन अगर हम देखें ऑन वेरियस, अगर हम श्रीलंका से देखें काफ़ी पुअर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया इज़ नॉट इम्प्रूविंग इट्स ओन हेल्थ फैसिलिटीज़। येस बेटा, हेल्थ केयर सेंटर्स विच आर डिवाइडेड इनटू द टू, द पब्लिक एज वेल एज द प्राइवेट वन। अगर हम पब्लिक हेल्थ सेंटर्स की बात करें तो सिचुएशन इज़ अनसेटिस्फैक्टरी in terms of unavailability of doctor, in terms of unavailability of medicines at the primary health care centers, you can say dispensaries over there, especially in the rural India. डॉक्टर नहीं होते हैं, दवाई खाने में दवाइयाँ नहीं होती हैं, कंपाउंडर्स आर लुकिंग टूवर्ड्स द हेल्थ केयर ऑफ दैट सिस्टम। कई बार हमने देखा है, ये कटाक्ष नहीं है लेकिन ऐसा है। कई बार गाँव में अभी की सिचुएशन अभी सुधरी होगी, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे जब महामारी या मृत्यु दर बढ़ता है तो वहाँ पे लोग आज भी वैद्य या आज भी झाड़ फूँक कराते हैं या सुपरस्टिशियस है। Still the people are doing this you can say superstitious methods for eradicating the diseases. उन्हें नहीं पता कि disease actually में क्या है। They are not knowing about the hygienic condition. They are not knowing about what is the cause of the disease. ये बहुत ही you can say upcoming चैलेंजेस, एक तो चैलेंजेस रही हैं, ऊपर से जब भारत एक डेवलपिंग कंट्री है तब उसके सामने अभी भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वहीं पे दूसरी तरफ जहाँ रूरल इंडिया में लोगों को नहीं मिल रहा है हेल्थ फैसिलिटीज़, वहीं पे अर्बन एरियाज़ में लोगों के पास चूँकि पैसा है तो वो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, अच्छा प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्या है, उनके पास अच्छे डॉक्टर्स हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ आर देयर, मेडिसिन्स आर देयर, ऑपरेशन थिएटर्स आर देयर, और यही चीज़ें कमी कहाँ पे हैं, हम लोग रूरल इंडिया में देखते हैं। होता क्या है, अगर बीमारी बढ़ जाती है तो रूरल इंडिया से लोगों को काफ़ी जाके शहरों में जाके दे हैव टू सर्च फॉर द डॉक्टर्स, दे हैव टू सर्च फॉर द हेल्थ, और उसमें क्या होता है, दे हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। समटाइम्स लोगों को अपना ज़मीन बेचकर अपने प्रियजनों की सेवा संभाल करना पड़ता है, ऐसा होता है बेटा। हम कह सकते हैं कि जो पुअर पीपल है उनको एफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, बच्चों को न्यूट्रिटिव फूड प्रोवाइड की जाए। विमेन सेक्शंस जो खासकर प्रेग्नेंट विमेन हैं उनको भी न्यूट्रिशन वैल्यूड फूड प्रोवाइड की जाए ताकि वो माल न्यूट्रिशन से ग्रसित ना हो सके। कवासिकौर और मरासमस आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा है, ये बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि कहीं ना कहीं कुपोषण से ग्रसित होती हैं, और उसमें मेंटल एज वेल एज फिजिकल डेवलपमेंट दोनों क्या हो जाता है, वो निल हो जाता है, नलिफाइड हो जाता है। तो वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपर ना मिलने के कारण जो पॉपुलेशन है वो टर्न अप हो जाती है, उनको एसेट बनना होता है तो इट टर्न अप इनटू द लायबिलिटी। Due to unavailability of doctors and the medical staffs ultimately is a great challenge in front of us. ऐसा नहीं कि government is not putting efforts. Yes बेटा, they are putting efforts, but ultimately this is only the duty of the government to avail to give the citizen with affordable health care facilities, because the health is the basic right children. Health strong नहीं होगा, we cannot able to generate wealth. Education strong नहीं होगा, the person is not able to think about the welfare of its society. If housing is not provided, then we are not able to think about the constructive work, because we are not able to think about the dreams, think about the development of a country. So children, in this particular chapter, the sectors of Indian economy, there are many issues, there are many points through which we can say that there are lots and lots of challenges in front of Indian government. The sectors are playing their role over there, but ultimately the problems are same: poverty,
unemployment, unavailability of health facilities, unavailability of schools and education institutions, ultimately leads towards the challenges in front of the government, and the government is looking forward to fulfill its challenge because the government is a democratic government. By this notion, children, we are going to complete the chapter and we are finishing our chapter. In the next video, I would like to give you the revision or the recapitulation of the entire chapter. So children, watch the video. बीच में two videos are left over on I suppose on the topic of historical changes of the three sectors, I suppose. So we are moving towards, मैं उसको revisions में ले लूँगी. So children, we are going to finish the chapter, and this is the request to you all to watch the video, to go through with the questions, to think about that democratic government is not merely a government beta. The government, it gives opportunity of its citizen to live harmonious, happy and peaceful life. So by this, thank you very much students, and take care.